the functions, we have to write that particular block again and again, right? So we are repeating the same block again and again. So whenever we need to execute those kind of things, or in suppose we want to do the addition operation, so it needed three lines, a b c and sum is equal to a b and sum is equal to a plus b. So these are the three lines we have to write, right? So if I wanted to like whenever I need that particular block, I have to write it again. Okay, so whenever I required that particular block, we are writing it again. So that is not a a good thing. We have to reuse the particular block again, not rewriting. We are not rewriting things, we are reusing it, right? So that's where the functions comes in the picture. So function is what is my function, guys? Yes, Lucky. Okay, it is a reusable block of code, right? It is a, yes, reusable block of code which is used to perform some operation and execute some instruction. Is that clear, guys? Okay. What are the different types of functions we have, Mayuri? Great. Predefined function and user defined function. So, what is meant by predefined function, Lina? Not Lina, Lucky. Okay, so which is already provided. Okay. In the simple, we can say the answer you have given is correct. Nothing like wrong in that answer. But it is better to say it is already the function which is predefined. It is already defined. Predefined means which is provided, as you said it, which is provided, or we can say the function which already defined it, the function which already defined. So we don't have to define those functions again. It is already defined. Okay, fine. Let's talk about. We have seen the two types of functions. So our functions is divided into two parts, right? First, we have a predefined function. We are going to revise first, and then we will jump to the further thing. Okay, so we have a predefined function, and then we have a user defined function. Okay, user defined function, and we have seen what are the different user defined functions we have. So in user defined functions, we have a mainly two types of function with the no return type, function with the return type. So we have seen how to work with the functions with the no return type, right? Return type. Now let's talk about we have last time seen how we started. um, we were started talking about the function with the return type. तो हम आज बात करते हैं रिटर्न टाइप फंक्शंस के बारे में. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था व्हाट इज मीन बाय रिटर्न टाइप. What is this return type? Okay, the value, the type of value which you wanted to return from the function. Are you getting this? The type, the type of value. Okay, the type of value. Suppose we have a value. Suppose this is a 10. Okay, this is a value. But what is the type of this value? You can say it is a byte, right? It is a byte. You can say it is a sort. You can say it is an integer, right? Can you say like this? Okay, guys, can you say like this? Yes. So what is by return type? Return type means the type of value. Type, okay, very important. The type of value we wanted, we want to return from the function. मेरा sound आ रहा है सही से? Yes. Lina, sorry, Mayuri, Lucky. So the type of value which we wanted to return from the function. So this is the basic or simplest definition of return type. Okay. So what uh, what are the different types which we can return from the C? We have seen the type of value which we wanted to return from the function is a return type. Okay, this is the simple meaning of return type. Okay, so this is clear. Now, what type what type we can return from the function? What are these types? Okay, what are these types which we can return from the function? See, every data type we can return. Suppose you can return byte. Yeah, you can return byte from the function. You can return a sort. You can return integer. You can return long. You can return float. You can return all the data types which we have seen.
primitives and non-primitive. So it is a primitive types. Okay, you can return non-primitive as well, like a string. So all the types which we have seen, okay, can be written from the function. Okay, so it is a type. Okay, but what we are returning from the function, we are returning the value. Are you getting this, guys? Yes, making sense? बताइए, लीना और मयूरी, लकी, समझ आ रहा है? हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करते हैं, वी आर रिटर्निंग एंड आर गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, बट उसका टाइप क्या होने वाला है, ये बात समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज a return type. What is my return type? The type of the type of value which we are going to return from the function is called as return type. Is that clear? Making sense? Okay, I will again explain this return type phenomena. Okay, see, suppose this function we have, uh, this function is something which it is a function which prepare the food. We can call it safe, we can call it let's call it safe. So I will call it as a safe. Okay, so this is my function. Okay, so this is my function. It can take raw materials as an input. समझ में आ रहा है? Yes, guys, can it take raw materials from you as a parameter? Yes, बताइए. Okay, it can take raw material. uh, Suppose here, from here I will calling safe, and I'm calling my raw materials. What are the raw materials I have? Suppose I have let's take example. So our abcd raw material I'm using, right? Is it making sense? So abcd raw material I'm passing during the calling of this function. So this raw material is going where? To this function. It is going here within the function, right? So we have passed abcd as a parameter. So it could be anything, huh? I'm just taking example. So it is abcd. So abcd will like a goes here. Now this save function will use abcd to prepare my food, right? To prepare my meal, it will prepare my meal, right? Making sense? So here the save has did some like some kind of process on abcd. So ये मेरा abcd है, इसके ऊपर कुछ प्रोसेस हुआ है. So I'm just representing this कि इसके ऊपर कुछ प्रोसेस हुआ है. And now my abcd is converted into my meal. So it is my meal. Okay, so here is my meal. The save has converted my raw material into meal. So this is my meal, and this save will return me what? My meal, right? It will return this meal to me, right? So we can say return meal. समझ आ रहा है? Yes, guys, समझ आया? ठीक है. So it will return, it will do some kind of like a process on my abcd on the raw material. It will prepare the food. Can I say it is my output, guys? And it will return my output or my meal to where I have given the order. Here we have given the order, right? Right. So this save function has prepared my meal and returned me. समझ में आ रहा है? रिटर्न क्या किया? मील. और ये मील मेरे पास आया, यहाँ पे आएगा मेरे पास रिटर्न आया मील. The safe has prepared the like my meal and returned my meal. Are you getting this? So what will be the return type of this function? Safe. हम्म, क्या होगा इस फंक्शन का रिटर्न टाइप? विल इट मील? यस गाइस, क्योंकि ये मील प्रिपेयर करेगा और मुझे मील रिटर्न कर देगा. अब जब मील मेरे पास आएगा तो मुझे कैच तो करना पड़ेगा. अब मील कहाँ पे कैच करूंगा मैं? Here I will catch my meal. So suppose, so this is Lucky. Okay, Lucky will catch the meal. Milk, not milk. Lucky will catch the meal. Okay, तो यहाँ पे जो meal आएगा वो Lucky कैच कर लेगी. ठीक है. Now Lucky can access this meal. Making sense? समझ आ रहा है? बताइए. हम्म. Okay, great. So this is how what is mean by this return type. The return type is the type of value which we are going to return from the function. Suppose this is my output, right? This is my output. What is the type of this output? It is a meal, right? It is a type of meal, right? Yes. And that's why we are returning meal from the function. समझ आया है?
इस ये जो फूड प्रिपेयर है इसको मील बोल सकता हूँ मैं. Okay, so I can see this function is returning the meal, means it is taking my ABCD parameter, or it cannot take. Okay, it can simply do all those things without taking parameter, without parameter thing. Make doing some process means operation. Okay, the function is a tile block of code which performs some operation. So here it will perform some operation on my raw metal, prepare meal, and it is returning me this meal. That is what this return type means. Suppose I am having I'm having the function which is add, which is taken to parameter like a integer a comma integer b. Okay, and it will do what? It will like a calculate the sum and return me the sum. Okay, so here I can say integer sum is equal to a plus b. Can we say like this, guys? You guys, Lina, not Lina, Mayuri, Lucky. Can we say like this? Can we say it is my output? It is the output I have. OP. It is the output I have. Or we can say, can I say this is the value I wanted to return from the function? Sum. Hmm? Sum I wanted to return. Yes, guys. मयूरी लकी समझ रहा है, मुझे सम रिटर्न करना है फंक्शन से. सम का टाइप क्या है? इंटीजर. तो मुझे इसके सामने बताना पड़ेगा इंटीजर. यस. देन आई विल व्हाट आई विल डू, रिटर्न सम. समझ आ रहा है? बताइए. अब हियर आई विल कॉल इट ऐड. अब ऐड को कॉल करूंगा, सो आई विल पास द 10 एंड 20. हियर आई हैव पास 10 एंड 20. अब क्या होगा? 10 एंड 20 कहाँ पे जाएगा? इस फंक्शन के पास में. 10 कॉमा 20 यहाँ पे आ जाएगा. 10 ए में, 20 आ जाएगा बी में. सम हो जाएगा मेरा ए प्लस बी, और रिटर्न कर दूंगा सम. तो रिटर्न वैल्यू कहाँ पे आएगी? इस फंक्शन के पास में जहाँ पे आपने कॉल किया, यहाँ पे आएगी ना रिटर्न. यहाँ पे आएगा 20. यस. समझ आ रहा है कि इसका फ्लो कैसे चलता है? यहाँ पे आएगी मेरी वैल्यू रिटर्न होके. बताइए लीना, लकी, मयूरी, समझ आ रहा है? यहाँ पे 20 वैल्यू रिटर्न होके आएगी. तो इसको कैच, अब ये 20 जो वैल्यू है इसका टाइप क्या है? इंटीजर है. राइट. मेकिंग सेंस? बताइए. इंटीजर है तो मुझे इसे कैच भी किस में करना पड़ेगा? इंटीजर. इंटीजर आंसर इज इक्वल टू ऐड. तो ये जो 20 आएगा ये आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा, और आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20. समझ आ गया? बताइए. समझ आ रही है बात? हाउ रिटर्न फंक्शन वर्क्स? लीना, लकी, मयूरी. ओके. साला हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो. ग्रेट. This question is really really valid at this stage. Why we are returning this function? Suppose ये add है ना, it is add function. हम्म. ये add function है. और क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो sum है ये add की प्रॉपर्टी है. Like I have this add, I can call this is add function. So here I have sum, right? Sum I have a, I have a b, right? It is a property of what? Add function. समझ में आ रहा है? ये add function की प्रॉपर्टी है. जो भी उस ब्रैकेट के अंदर है, जो भी उस ब्लॉक के अंदर है, वो उसकी प्रॉपर्टी है. समझ में आ रहा है? जैसे हमारे घर में जो भी चीजें होती है वो तो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना. बोलो. है कि नहीं? वैसे ये ऐड का जो ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस है वो उसका वॉल है. उसका एक घर है ऐसे समझो. उसके घर के अंदर जो जो वेरिएबल्स होंगे, जो जो चीजें होगी, वो तो उसकी प्रॉपर्टी होगी. ये मेरा ऐड है. अब मेरा जो मेन होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये अलग है. ये है मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ओके. अब मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूंगा सम, तो मुझे एरर आ जाएगा. क्यों एरर आ जाएगा? एरर आ जाएगा क्यों? क्योंकि ये सम तो अपनी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो ऐड की प्रॉपर्टी है ना. समझ आ रहा है? बोलो. हम उसको यूज करते हैं जब हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सम करते हैं. तो सम प्रिंट कहाँ पे हो रहा है? इसी ब्लॉक के अंदर प्रिंट हो रहा है. यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है. समझ में आ रहा है? एग्जीक्यूट है यहीं पे हो रहा है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट सम. बट अगर हम यहाँ पे सम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा ना. बोलो. समझ आ रही है बात? मैं लकी. तो मुझे क्या चाहिए? देखो, हमने मॉड्यूलरिटी की बात करती है. देखो, एक फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है, सपोज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंक्शन.
इस एक फंक्शन की प्रॉपर्टी हम दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज दिस। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक फंक्शन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्टली दूसरे के अंदर यूज कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज ऑब्जेक्ट और जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज सिक्योर, इट विल नॉट let you access the sum directly, you cannot access it because it is secure. It will say okay, so this is the adds property, जो add है उसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है वो add की प्रॉपर्टी है, आप दूसरे की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते। कैन यू गाइज? In real life you cannot we cannot access the property of other persons. So same thing, public static void main अलग है, add अलग है, तो add की प्रॉपर्टी public static void main की में यूज नहीं कर सकते। तो हमने मॉड्युलरिटी की बात करते हैं। मुझे बताइए, यहाँ पे कुछ वैल्यूज जनरेट होगी, कुछ आउटपुट आएगा। सो सी व्हाट आई हैव, व्हाट इज लाइक अ बेस्ड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। सो हमें पता है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक बॉस फंक्शन होता है ना, बॉस होता है, एक बॉस फंक्शन की तरह काम करता है। क्यों बॉस होता है? क्योंकि वो जिस फंक्शन को कॉल लगाएगा वो फंक्शन रन होगा, उसने जिसको कॉल नहीं लगाया वो रन ही नहीं होगा। समझ आ रही है बात? वो जिस फंक्शन को कॉल लगाए वो फंक्शन का तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? यहाँ पे मेरे पास तीन फंक्शन है, आई हैव अ F1, आई हैव अ F2, आई हैव अ F3, आई हैव अ F4। अब इनमें से कौन सा फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए वो कौन बताएगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अगर इसने बोल दिया F1 तो F1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हैज़ अ कंट्रोल ओवर ऑल द कोड। जो भी हम कोड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को छोड़ के, उसका सारा जो कंट्रोल होता है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के ऊपर होता है। कौन सा कोड रन होगा, कौन सा रन नहीं होगा, कौन सा पहले रन होगा, कौन सा बाद में रन होगा, उसमें कौन कौन से पैरामीटर जाएगा, वो सारी चीजें बॉस डिसाइड करते हैं। अब देखो बिजनेस के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसको एक बहुत एग्जांपल समझो। अब देखो, हमने बात की थी फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन क्यों यूज करते हैं, ताकि मॉड्युलरिटी आए कोड के अंदर, राइट? वी आर डिवाइडिंग द बिग टास्क इनटू द स्मॉलर वन, राइट? समझ आ रहा है? यस, मेकिंग सेंस? अब देखो, ये जो फंक्शन टू है ना, ये हो सकता है कि ये डिपेंड होता है, ये फंक्शन टू ऐसा हो सकता है कि ये वेट कर रहा है कि फंक्शन वन अपना काम करेगा, कुछ वैल्यू जनरेट करेगा, और फिर वो वैल्यू मुझे मिलेगी। यानी मैं बोलता हूँ, वो फंक्शन टू क्या कर, फंक्शन क्योंकि प्रोसेस है ना, एक एक फंक्शन है वो अपना काम करेगा, वो जो वैल्यू जनरेट होगी वो वैल्यू हो सकता है दूसरे फंक्शन को चाहिए होगी आगे काम करने के लिए। सपोज यहाँ पे F1 फंक्शन है, तो ऐसे समझते हैं कि हम डेयरी का एग्जांपल लेते हैं या फिर हम आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पनीर और एनी मिल्क प्रोडक्ट। तो जब तक F1 फंक्शन यानी क्या है, जो मिल्क प्रोवाइड करेगा, मिल्क प्रोवाइडर, ओके, मिल्क प्रोवाइडर। तो मिल्क प्रोवाइडर क्या करता है, मिल्क कलेक्ट करता है, फिर उसको ट्रीट करता है, अलग अलग ट्रीटमेंट्स करता है, बराबर है? तो ये मिल्क प्रोवाइडर का काम क्या है? मिल्क को इकट्ठा करना, उसको उसको प्योर करना, सारी इम्प्योरिटी निकालना, उस पर अलग अलग ऑपरेशन करना, ये हो गया F1 फंक्शन का काम। अब दूसरा फंक्शन है जिसका काम है पनीर बनाना है। इसको पनीर, इट विल मेक अ पनीर, ओके, पनीर बनाएगा। अब ये पनीर कब बनाएगा? जब उसको मिल्क मिलेगा तभी तो पनीर बनाएगा, राइट? समझ में आ रहा है बात? क्योंकि F1 फंक्शन का काम है पूरा मिल्क को रेडी करना, प्रिपेयर करना। समझ में आ रहा है बात? डायरेक्टली तो पनीर नहीं बनेगा, पहले इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना मिल्क। समझ में आ रही है बात? तो मिल्क इकट्ठा करना, उसको प्रोसेस करना, उसको सारी चीजें करना पड़ेगा। अब वो एक फंक्शन का काम होगा। हम ऐसे नहीं बोलते कि मिल्क भी वही इकट्ठा करेगा और वो पनीर भी वही बनाएगा, ऐसा नहीं करते। पनीर कोई और बनाएगा, वो फंक्शन का काम होता है डिवाइड करना काम, एक सारा काम एक फंक्शन से नहीं करवाते। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन F1 फंक्शन कॉल करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल कॉल द F1 फंक्शन। अब F1 फंक्शन क्या करेगा, पूरा मिल्क इकट्ठा कर लेगा, सारी चीजें कर लेगा। अब मैं बोलता हूँ कि F1 फंक्शन हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा या फिर मिल्क प्रोवाइड करेगा, बोल सकते हैं ऐसे? कैन वी से लाइक this F1 function will provide the milk, yes? Or we can say, can we say guys, this F1 function will return the milk? hmm RT, मिल्क रिटर्न करेगा मिल्क। क्योंकि मैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, देखो, जो मिल्क है वो डायरेक्टली F1 से F2 में नहीं जा सकता डायरेक्टली, ये बॉस डिसाइड करेगा कौन कहाँ पे जाना चाहिए। तो सबसे पहले F1 क्या करेगा, मिल्क रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे मिल्क आ जाएगा, सो हियर वी विल हैव अ मिल्क। और जब मैं F2 को कॉल करूंगा, देन आई कैन यूज दिस मिल्क एंड गिव इट टू द F2 फंक्शन। समझ में आ गया? हम्म
क्योंकि ये जो F1 फंक्शन है और ये F2 फंक्शन है, ये एक दूसरे में डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। बॉस डिसाइड करेगा कि किसको क्या जाना चाहिए। तो क्या करेगा, F1 फंक्शन अपना काम कर लेगा, रिटर्न कर देगा मिल्क F1 फंक्शन को। यहाँ पे हमें मिल्क आ जाएगा मेन फंक्शन में, इसलिए हम रिटर्न करवाते हैं ताकि यहाँ से रिटर्न आएगा ना तो मेन फंक्शन के अंदर आता है वो वापस। समझ में आ गया? जब भी रिटर्न होता है तो वो मेन फंक्शन में वापस आता है। समझ में आ रहा है? यानी हमने यहाँ से मिल्क रिटर्न किया तो यहाँ पे मिल्क आ गया ना मेन फंक्शन के अंदर। अब इस मिल्क को हम क्या करेंगे, F2 फंक्शन को पास कर देंगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं रिटर्न नहीं लिखता हूँ ना तो वो डेटा F1 फंक्शन के पास में ही रहेगा, मेन के पास में आएगा नहीं। और अगर मेन के पास में नहीं आएगा तो अगर आगे कुछ फंक्शंस है जिनको वो वैल्यू चाहिए। 8। हम्म। तो आगे कुछ फंक्शंस है, सपोज वी हैव F2 फंक्शन, F3 फंक्शन, जो कि एक दूसरे पे डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, F1 को कॉल करेंगे, उससे रिटर्न मांग लेंगे वैल्यू, तो वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू हम दूसरे फंक्शन को पास कर सकते हैं, F2 को, F3 को, F4 को। समझ में आ रहा है? सो द रिटर्न वैल्यू वी कैन यूज फर्दर टू डू अ डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन इट। समझ में आ रहा है लकी? तो अगर अगर मेन में मेरा रिटर्न नहीं आएगा वैल्यू तो मैं उसको आगे नहीं भेज सकता, क्योंकि ये चीज़ नहीं हो सकती ना, ये वाली चीज़ कर नहीं सकते, फंक्शन एक दूसरे में डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड में होती थी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे सी प्रोग्रामिंग में उसमें चलता था, बट इसमें नहीं चलता। इसमें कोई भी किसी को डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई भी किसी का डेटा चेंज नहीं कर सकता। तो जैसे ही मिल्क रिटर्न कर देगा तो मिल्क हम हमारे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कोई भी वेरिएबल, फिर उसको F2 में भेज देंगे तो F2 अपना मिल्क के ऊपर प्रोसेस कर लेगा, पनीर बना देगा। फिर ये F2 रिटर्न कर देगा पनीर यहाँ पे, तो F2 पनीर रिटर्न कर देगा, है ना? फिर ये पनीर हम F3 फंक्शन को भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है? बताइए, लकी समझ आया? दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग। ओके, ताकि हम उसको आगे यूज कर सकते हैं। So this is the basic example. Now let's go and try to make some solve some questions on this, and it is so easy, so easy. Okay. So the first question that we are going to solve is like doing simple addition operation. Okay. So we have to take a two number, like a and B. Okay. Calculate the sum. हम क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे A and B, and we will calculate the sum and return the sum. Okay. So we have to calculate the sum. So I will write sum, or we can say add, uh, or we can say anything. Let's say I will use addition. I will use add. मेरा साउंड तो आ रहा है ना सही से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? लकी, लीना, मयूरी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना? हाँ। तो सबसे पहले ऐड यूज़ कर लेते हैं। मैं इसमें दो, आप इसको पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हो, नो पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नो पैरामीटर चाहिए तो भी कर सकते हो, पैरामीटर चाहिए तो भी कर सकते हो। दोनों तरह, सबसे पहले दोनों मैं सिंपल करता हूँ। ओके, आई विल यूज द विदाउट पैरामीटर। तो यहाँ पे ये कर लिया, और इसके अंदर इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, है ना, इंटीजर बी इज इक्वल टू 20, और सम कैलकुलेट करते हैं, और इंटीजर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, दैट इज a सिंपल थिंग। ओके, अब ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करेगा सम। अब मुझे बताइए, अगर ये रिटर्न कर रहा है सम, तो व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप फॉर द फंक्शन ऐड? लकी, मेरी, कैन यू हियर मी? Integer, very good. What will be the return type of this function? Integer, very good. Can we solve these questions by doing this? Can we solve this question something like this? Integer add, integer a, comma, integer b. Can we do like this, guys? Integer sum is equal to a plus b. Yeah, we can do like this. Return sum, ये ऐसे भी कर सकते हैं, राइट? सो वी आर रिटर्निंग द एडिस सम विच इज ये। ओके, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ओके, हम इसको कोड भी करेंगे, बट इस तरह से लिखते हैं। लेट्स गो एंड ट्राई टू राइट सम कोड फॉर दिस, एंड इट इज वेरी इजी गाइज, यू कैन इजीली डू दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो इसमें नो पैरामीटर और पैरामीटर दोनों कवर कर लेते हैं, बिकॉज आपको पता है कि पैरामीटर नो पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर में पैरामीटर आएगा, नो पैरामीटर में कुछ नहीं आएगा, है ना? Let's try to write some line of code for this. We are going to solve some questions, so that you will have a basic understanding how it's work, how return works. And always remember that the return type you have given, suppose you have given the like a integer return type, right? So you have to return the same type of value which you have mentioned during the function declaration. Okay, it is very important.
Let's wait. Let's see how it's working. Okay, it is taking longer time to respond. Okay, fine. You guys, can you see my screen? Hmm? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मयूरी, लकी. ओके, सी हाउ वी कैन डू इट. सबसे पहले हम करते हैं. आपको आपका अगर रिटर्न टाइप आपको पता नहीं है रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, तो सबसे पहले रिटर्न टाइप मत दो. मैं लिखता हूँ स्टैटिक. मैं रिटर्न टाइप नहीं देता हूँ. सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऐड पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. अगर आपको कंफर्म नहीं है क्या रिटर्न करना है, तो मैं बोलूँगा आई विल टेक इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी. Then I will calculate addition. So I will write integer sum is equal to, I will write sum is equal to a plus b. So I will write a plus b and I will return sum. Okay, I will return sum. अब मुझे पता है मैं रिटर्न सम कर रहा हूँ. सम का टाइप इंटीजर है, सो आई विल राइट इंटीजर here. Okay, fine, no problem. And here I will write static integer add. Fine, very good, very easy. Now I will call this function. Add 10 comma 20 पास करते हैं. बहुत इजी है. 10 comma 20. देन इसको कैच करना पड़ेगा इंटीजर में. सो आई विल राइट इंटीजर आंसर इज इक्वल टू ऐड, देन सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आंसर. आर यू गेटिंग दिस गाइस, हाउ इट्स वर्किंग? बताइए. सम कैलकुलेट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न आंसर में स्टोर कर लेंगे, फिर आंसर को प्रिंट कर लेंगे. लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड and see how it's working. Okay, so you are getting 30, right? This is the answer we have. We can calculate the subtraction as well. We can do subtraction as well. Let's try to do it. So I don't know the return type, so I will write subtraction parenthesis opening brace closing brace. Then I will take integer a comma integer b. I will calculate the subtraction, or we can say I can call it answer. So integer answer, I can call it answer is equal to a minus b. Okay, and I will return answer. Okay, so the type of value I'm returning answer integer है, तो मैं इसको integer लिख देता हूँ. Integer will be return type, and then I will write static. So I don't know why we are adding static, but yeah, for now just ignore static. Here again I will just catch in the same variable answer is equal to subtraction. Subtraction I will pass 100 minus 20, 100 comma 20. Okay, and then system out dot print answer. So I'm using the same variable. See guys, here I have used answer, same answer I have used here, but the value will be changed. Here we will have 30. Now printing the answer, then I'm catching another value in the same variable and printing it again. So we are just using the same variable again and again. Okay, we are, don't have to create again and again. See, you can see 30, 10 and 20, 30. Then we have 100 minus 20, which is 80. Yeah, it is how we can do. Let's try to calculate the average of three numbers. Okay, so we will calculate average. You can use a no parameter and parameter as well. Okay. If you wanted to do with no parameter, what you will do, you will just remove this from here and you will declare it inside this. A is equal to 100 and integer b is equal to 20, and then you will do a minus b and return it. Okay, and you will remove this 10 and 20 from here. Making sense? बताइए. Which one? Yeah, it depends, Lucky. It is not like we always have to use the no parameter, always have to use parameter function. We have to think. Okay, so this is the requirement. Which function I have to create? No return type, no parameter. We have to decide this. It is not in our hand. Okay, so depending upon the situations we are in right now, means depending upon the situations we have to write the code. We have to decide it. Sometimes you will write the function like this. Sometimes you are going to write this function like this without parameter, with parameter. Sometimes you are going to write the function with no return type. Sometimes you are going to write the function with the return type. So it depends on the situation. Okay. uh
Yeah, so the requirement, the type of requirement we have, we will write the code accordingly. So but we can do it right, like with no parameter like this as well. Okay, now let's create the function which will calculate the average. So I don't know the return type. I will just write average, or we can say calculate average avg, calculate average parenthesis opening brace closing brace. You can take parameter, you can take parameter, and you cannot, means you can write function without parameter or with parameter, depends on us, depends on the requirement we have. It is mentioned in the questions itself what you have to do. But when you go for the development, when you learn Java and started learning some development, something like a Spring Boot and Android development, then you have to think which function I have to write here, with parameter, without parameter, no return type, with return type, it is depend. So I will write with parameter, so integer a, integer b. So it will calculate average. So I will write integer answer is equal to a plus b divided by 2. So I have to put this in bracket, so a plus b, because we have to follow the maths rule. And then I am going to return the answer. And what is the type of the answer? Integer. So I will put integer here and the static here. Okay. I'm just trying to, I'm just using this stuff to just uh, make you familiar with the return type. Otherwise, I don't write the function like this. But as a beginner, you will try to do this. You don't know what will be the type of the this function, what will the return type. So you will just calculate answer, return this from the function, and then put the type of the value you are returning. Okay. So this is the calculate average. Calculate average of for two numbers. So I will write two. Calculate average of for two. Then I will just go down here. Um, uh, Calculate average of a 2. So I will pass two number 10 comma 20, and here I have to catch this in answer. Answer is equal to calculate 2. Then I will not dot print answer. Okay, so it is how it's working. So let's run this 10 and 20. If I will 30 divided by 2, that will be 15. So let's try to run this and see what we are getting. Yeah, so we are getting 15. 15. Okay, that is the right answer. So we can, usually I don't write code like this. If I wanted to calculate the average of a three number, I will write static integer. I already know what type of value I'm returning, so I already know that. But as a beginner, you can skip this. You can write like this as well, static integer. If you already know what type of value I'm returning, you're sure about it. So you can directly write static integer. I'm returning integer value. Then I will write static integer calculate average of three numbers and parenthesis opening brace closing brace. Okay, then I will calculate. You can use no return. You can use parameter or not. I will use parameter integer a, integer b, integer c. Then I will write integer answer is equal to let's put it in bracket a plus b plus c divided by 3 and return the answer. Okay, समझ आ रहा है? मयूरी समझ आ रहा है? Okay, just call it from here. We will call it. So I will write answer में catch करना है. So I will write answer is equal to calculate average of a 3, the 10, we can write 10, 15 and 110, and then system dot print, not sort back, system dot print answer. Okay, just run this. Okay, so you are getting 56. So this is the average of a three number. And if I will tell you this println is again the function. Suppose as we have a some calculate average and we are passing parameter a b c d. This println is again a function which is taking our answer as a parameter. समझ में आ रहा है? Tina, Lucky. It is again println is again the function which is taking answer as a parameter. समझ में आ रहा है? Okay, it will make sense. Now what I will do, I will write a function to calculate the area of a circle. I will write a function to calculate the area of a circle. Okay, so let's take calculate, or we can say area of circle. Okay, this is the function name I have. सबसे पहले मुझे पता नहीं है रिटर्न टाइप क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल. अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? 3.14, राइट? पाई आर स्क्वायर, राइट?
क्या होता है, बस बताइए। पाई आर स्क्वायर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 3.14, राइट, इनटू आर स्क्वायर, है ना। So 3.14 is a float value, right? And we are going to store it in the answer. So the type of answer should also be float, right? Hmm? Okay. So this is what we have to think. कि क्या वो कौन सा आएगा? So I will write 3.14. Hmm. Let's take answer. I will write answer is equal to 3.14. ये ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले float लिख देना चाहिए हमने. Float answer is equal to 3.14 into r square. Okay. R. अब R square क्या होता है? R into R, right? Radius into radius. So can we take integer radius from here, guys? Hmm? Yes. Or R? Can we take R as a parameter and then R into R? बताइए. Yes. So now what is happening here? So we are using integer. So we are going to multiply this integer here. So it is making problem because here we have passed the integer, right? So if we wanted to pass the integer, we have to like convert this integer into float. समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्लोट के अंदर और फिर स्टोर कर रहे हैं, तो हमें इसको कन्वर्ट करना, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो यू कैन यूज अ कन्वर्ट समथिंग लाइक फ्लोट, बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द फ्लोट, राइट. समझ में आ रहा है मयूरी, लकी, समझ आया? बताइए, संपर्क का समझ आ रहा है, फिर से एक्सप्लेन करो. देखो यहाँ पे जो वैल्यू हमने आर लिया है वो इंटीजर वैल्यू है, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्लोट के अंदर और फ्लोट के अंदर स्टोर करते हैं, ये इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आ रही है, राइट. सो दैट इज मेकिंग प्रॉब्लम. सो if you want the precise answer, accurate, precise, then you can use a float. Otherwise you can calculate the area of a circle in the integer as well, but it will skip the float value, it will not give you the point value, it will give the only integer value. तो आप फ्लोट में भी कर सकते हो. तो अगर आप यहाँ पे आर इंटीजर में लोगे तो इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांटेड टू store it in the float, so we have to convert into the float, and then I will return the answer from this. Now I know the type or value of like a value of type I'm returning. तो आंसर फ्लोट है तो यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप लिख दूंगा फ्लोट. देन आई विल जस्ट ऐड द स्टैटिक. मेकिंग सेंस गाइस, बताइए. लीना, ओके, लिटिल बिट फिर से बताऊं. ओके, just take here. Okay, so we can do it. The purpose I'm doing this so that you will get familiar, you will like get a quick revision what we have did in the previous sessions. You will get the reminder about the like data type conversion. You can see data type conversion here. So when you see it, you will like have this small revision part, right? So why I'm taking integer r here, because that's when you can see this type conversion. If I have not taken this here, you cannot see it here, right? So whatever we have seen in the last part, last sessions, we have to repeat those. That's how you will remember it, otherwise you will forget that part. Hmm? Okay, we can take it at integer as we can take the float as well. No problem, you can take it. Okay, you can take float r. Now you will store it in the, there is no use to do this. Hmm. A float r, you are taking float r. Oh yeah. So see, the range of the float is going out, means, see, if I will hover on this, what it's saying, required type float and provided double. What it's saying, required type float and provided double, means the answer we are generating is of a type double. It is the float variable cannot like hold this much value. It is the float is a smaller value. So see what it's saying, required type float and provided double. So the value we have here is a double value. It is saying that. So if you wanted to store this double value inside a float, you have to cast it first step. समझ में आ गया, क्योंकि डबल एक बड़ा वैल्यू है और फ्लोट एक छोटी वैल्यू है. समझ में आ गया, यानी एक टाइप है.
तो आपको अगर डबल वैल्यू फ्लोट के अंदर स्टोर करना है तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, या फिर आप इसको डबल में स्टोर कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? ओके। सो देर इज अ रेंज प्रॉब्लम, तो यहाँ पे डबल लिख देते हैं। और फ्लोट ले लेंगे, फ्लोट ले तो लेंगे फ्लोट, बट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डबल में हो जाएगी वैल्यू कन्वर्ट, और फिर आंसर में स्टोर कर लेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। अच्छा मयूरी बताइए, समझ आ रहा है आपको? ये चीज़ समझ आ रही है मयूरी? और बाप, कब से डिस्कनेक्ट हो गया? बहुत टाइम से। ओके। shall we wait? Don't worry. I'm recording this lecture, so yeah. Can you hear me, Lucky? Okay. See, so the area of circle is written in double value, right? So we have to catch it in the double, right? So I will write double area of circle is equal to एरिया ऑफ सर्कल, है ना? यहाँ पे पास कर देंगे 12.2। ओके एफ, क्योंकि हम फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हैं तो एफ लगाना बहुत जरूरी है। 12.2 एफ। फिर सिस्टम डॉट प्रिंट एरिया ऑफ अ सर्कल। समझ आ रहा है लकी? बताइए। क्योंकि हम डबल वैल्यू रिटर्न का डबल में कैच किया, अब यहाँ पे फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हैं हम फंक्शन को, तो एफ लगा दिया और फिर इसको प्रिंट कर दिया। समझ आया? हम्म देखो। ओके, लेट्स ट्राई टू डू वन मोर, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, लेंथ एंड क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ होता है। देन एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताइए। हम्म हाउ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताइए। लकी। आर यू श्योर? ओके, कैन यू थिंक अबाउट इट? Okay, the area of rectangle is length into width, so I'll write L into W. Okay, so it is integer value, so I'll write integer static, and return the area. Okay, see, you can calculate area and then return it. Okay, we are calculating area and then returning it. There is one more way you can do it. You can directly return the value, something like you can directly write return L into W. Making sense? कब तक, कब से नहीं दिख रहा है? शेयर तो है। Hmm. Okay, okay, fine. See, so what we have did, we can means we can first calculate the answer and then return it, something like this. Okay, or we can directly return L into W like this as well. समझ आ रहा है? Hmm. So we can do this. So it is a type of integer, right? Yeah. So it is integer. So I will just go down here and I will catch it in answer. So answer is equal to area of a rectangle. I will pass 11 and let's pass 4. Okay, and we have stored it in the answer. Let's print it. So I'm printing answer. Let's run this. Okay, so you see, you are getting this point value, the precise value of the area of a circle, right? See how bigger value it is. The float cannot store this much value. Okay, so see the area of rectangle is 44. समझ आ रहा है?
Let's calculate the area of a triangle. So okay, so area of triangle. How to calculate area of triangle? What we need? Base into height, right? Yes. So we will call integer base, है ना? Or integer HEIGST height. ओके सो विल कैलकुलेट इंटीजर आंसर इज इक्वल टू क्या होता है अब देखो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग रहा है बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट आर वी डूइंग दिस लकी so answer will be what we will use double. But we can use float, we can use float, no problem. We can use it we can use okay तो आप float भी यूज कर सकते हो बट अगर बढ़ी जा रही है वैल्यू तो उसको कास्ट करना पड़ेगा ठीक है integer answer is equal to so I will write half into base into height so I have like base into height so this is my answer right half into base into height so double will be this so I will return the double value and it will be static and let's return this answer from here return answer fine no problem uh, let's go here so we are returning double value so I will let double area of triangle है ना then is equal to calculate or area of triangle then I will pass base let's 20 height let's pass 7 so this is the value I have I will not dot print area of a triangle okay it's fine let's run this समझ आ रहा है देखो 0.0 आ रहा है half into base into height let's pass a different value half into why we are getting 0 here 0.0 okay what is this the half into base into height can be replaced with okay half into base into height can be replaced with 0 so we have passed a very smaller value so we have passed a very smaller value let's pass some bigger value I will write 110 and pass 70 I hope it will not again you cannot see okay okay no problem lucky so we will try to stop here for